The Patriot is a dramatic monologue in which the narrator, a patriot of his country, is being sentenced to death. He recounts what had taken place a year back. Let us see the first stanza. With myrtle mixed in my path like mad, the house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day. The poem opens with a highly sensory language, which is maintained throughout the first and second stanza. We are told that the people had showered roses all along the path as a gesture of celebration. They had strewn the path with roses, adorned the church spires with flags, and clambered atop house roofs and walls that it seemed to come alive with their cries. The reader's sense of sight, smell, and hearing is instantly captured through the use of roses, the smell of myrtle, and the ringing at the church bells. You see, children, the first stanza drowns the sense with the combined use of visual, olfactory, and oral imagery. Just think, if we talk about your environment, you see, if you win a match, what happens? The whole classes, they welcome you. When the Indian team, it wins the matches and come back, how the Indian team is welcomed. And in different manner, we show our happiness. In the same way, when the patriot came back to his nation, people, they decorated and they filled the path with roses, white roses and red roses. White and red roses, they have a great significance in Christian mythology. These roses, red and white, they are associated with Aphrodite, the Greek goddesses of love and beauty. And in Christianity, it represents the idea of martyrdom. The second stanza. The air broke into a mist with bells. The old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise rapples, but give me your son from yonder skies. They had answered, and afterward, what else? Children, you see here, broke into a mist with bells. It means mist with bells here stands for the sound of the bells. Sound of the bells मतलब उसके लिए जो चर्च में बेल्स बज रहे थे और जो लोग जो जॉय में क्राई कर रहे थे, क्राई इन द सेंस दे वर शाउटिंग. So both are such thick, both of the voices, the voice of the bells and the shout in the honor of the victory, that was such thick that it brings an appearance that into a mist with bells. So this is for that. Other word is rocked. Rock means shoe. One more word is there, ripples. Ripples आपने साइंस में पढ़ा होगा. Like charges they repel, unlike charges attract. यहाँ repel मतलब है hateful or distasteful. Now let's begin. Here in this stanza, the speaker continues narrating the old story. The second stanza is very clear that it appears that this is a chapter of Patriot's life in which he is a hero. Everyone is willing to do anything he asks. So he describes that even to the readers, people were rejoicing by ringing bells, and the entire atmosphere was thick with its noise. Thick means the voice of the bells, the ringing of the bells, or the sound of the bells. And these sounds were in honor of the victory, and the second is the shouts of the people. So, and these people, they were standing on some kind of old structure.
and cheering for Patriot with their cries, rocking the wall. Rocking the wall मीन्स हिला नहीं रहे थे वो वॉल को, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उनकी आवाज़ों की गुंजन से वो रिवर्बरेशंस हो रहे थे और उससे वो कंपन हो रहा था दीवार पे. एंड दैट इज वाई इट रॉक्स with the cries of joy. Next, but give me your son for yonder sky means, next he says that such great was his image that even if he asked the public for the dearest thing on which their sustenance depends, they would have readily given it to him, and further would have asked what else he wanted. Children, a very deep meaning is here. यहाँ पे जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो आप कहते हैं ना कि चांद सितारे तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा. इट डजंट मीन दैट यू विल लीप एंड प्लग द सन एंड स्टार्स फ्रॉम द स्काई. इज इट? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन एक बोलने का तरीका होता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ. कहने का मतलब जो मेरी डेरेस्ट चीज़ है अगर तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा. सेम थिंग यहाँ पब्लिक जो है वो यही कह रही है अपने हीरो से कि इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग यू आस्क द डेरेस्ट थिंग ऑन विच आर सस्टेंस डिपेंड्स, वी आर रेडी टू गिव यू. दे वुड हैव रेडीली गिवन. नॉट ओनली दे वुड हैव रेडीली गिवन, बट दे वुड हैव आस्क्ड व्हाट एल्स ही वांटेड. बच्चों, दिस स्टैंजा स्पीक्स हिज popularity. Let's begin with the third stanza. Allah, it was I who leaped at the sun, to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone. And you see my harvest, what I reap, this very day now a year is run. In this stanza, the speaker gives discourse. Discourse, pravachan hota hai, on what all he did for his country. It begins with the poet giving a subtle reference to the old Greek mythology. A tale of Icse and Daedalus. बच्चों एक वर्ड आया है यहाँ leaped. Leaped is what? Jumping. Here, let me tell you children the short story of Daedalus and Icse. Daedalus was a brilliant inventor. यहाँ बताएं बच्चों, वो अपने समय का थॉमस एडिसन कहलाता था. Unfortunately, he angers King Minos, the ruler of island Crete, and he has to hightail it out of there. उसको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उससे जो राजा थे वो क्रोधित हो गए और उसे बाहर निकाल दिया. Desperate to flee the island, Daedalus uses wax to build some wings for himself and his son Icse. Daddy Daedalus wants his son to fly at a middle height. अब उन्होंने बनाया तो था लेकिन अपने बच्चे से उन्होंने कहा कि इसको लगा के एक मिडिल हाइट में उड़ना, क्योंकि बच्चों फेदर के साथ वैक्स यूज़ किया था उन्होंने विंग में. वो भी उस ज़माने के बहुत बड़े इन्वेंटर थे. लेकिन आप जानते होंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर हाइट में जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा तो वैक्स पिघल जाएगी. इसलिए उन्होंने अपने बेटे से बोला कि एक मिडिल हाइट में फ्लाई करना. बट व्हाट हैपेंड? हिज सन forgot. He got little bit cocky and he forgot the advice of his father. He was having so much fun flying that he forgets the warning and flies too close to the sun. Sure enough, his wings melt and Icse plummets into the sea and drowns. और उन्होंने जब उनके फादर वहाँ गए तो वहाँ पे जब उन्होंने बहुत दुखी हुए कि उनका बेटा ख़त्म हो गया था, वहाँ पे उनका एक टेम्पल भी बना हुआ है और वो जो आइलैंड है उसका नाम भी इनके बेटे के नाम से ही है. यहाँ जो दिया गया है, ये जो कहानी बताई गई है, ये इसलिए बताई गई है क्योंकि जब ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं लोग तब वो गिरते हैं.
तो सेम थिंग पेट्रियट भी यही बता रहा है। लोगों ने तो कहा कि हम आपको ऊपर से सूर्य तोड़ दें, यानी ऐसा इम्पॉसिबल वर्क कर दें, बिकॉज दिस वॉज सिंपली इम्पॉसिबल। लेकिन वो नहीं, बल्कि इसने कुछ ऐसा इम्पॉसिबल किया था। कभी कभी आप जो करते हैं दूसरे के अच्छे के लिए, वो दूसरे लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं, और आप जिसको गुड डीड कहेंगे लोग उसे मिसडीड कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो शायद पेट्रियट को लगा कि ये जो मेरी फ्लाइट थी वो एक ओवर एम्बिशियस वाली फ्लाइट थी। So just like Icarus, the speaker in the sense, the patriot admits that he did every impossible thing a man could have done to make things right. Despite this, he is facing his undeserved end. He calls to attention the miserable state he is in. और यहाँ बच्चों जो है ना, कर्मा, कभी कभी जो कर्म होते हैं हमारे, उसका रिवॉर्ड मिलता है। वही ये सोच रहा है कि शायद मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैंने लोगों का अच्छा करना चाहा, लेकिन लोगों के अच्छे की बजाय उसका जो मुझे रिवॉर्ड है ये मेरी मिजरेबल स्टेट है। द पोएट यूजेस दिस टू कन्वे दैट व्हाट ही इज फेसिंग is not what he truly deserves. Is this the reward from his people? In sad tone, he says that the people had forgotten him. Just see the fourth stanza. There's nobody on the housetops now. Just a palsied few at the window sit. For the best of the sight is all allow as the shambles gate, or better yet, by the very scaffold's foot, I trow. Here, see quite a contrast of the stanzas above. The speaker returns to the present. अभी तक जो था वो फ्लैशबैक चल रहा था, और अब जो है प्रेजेंट में पोइट्री चलेगी। The speaker returns to the present and talks about what he sees. He describes the present setting and in a way contrasts it the one on the same day a year ago. आज से 1 साल पहले क्या था? ऊपर छत में भीड़ थी, लोगों की आवाज़ें थी, रास्ते में रोजेस बिखरे थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक 1 साल पहले कुछ और था इस दिन, और आज देखिए आज क्या है। यही होती है जनता बच्चों, कभी सर पे बैठा लेती है और कभी तुरंत सर से उतार देती है। Now he has been convicted and is being led to the gallows to be put to death. आज से पहले उसका स्वागत किया गया, लेकिन आज उसको कन्विक्ट मान लिया गया कि उसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ देश द्रोह का काम किया है। तो उसे कहाँ ले जाया जा रहा? गैलोस की तरफ ले जाया जा रहा था। As opposed to the setting in the first stanza, now the place is all empty. Now there's nobody on the rooftops cheering him, only old men who are taken down by palsies. बच्चों यह जो पैल्सीड है, पैल्सी इज व्हाट? अ डिजीज जिसमें शरीर पैरालाइज हो जाता है। तो दे आर अनेबल टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड्स, so they were sitting and they were looking at him. So nobody was on the houses and they were watching the patriot as he marches towards his death. Now come to the 5th stanza. I go in the rain and more than needs, a rope cuts both my wrists behind, and I think by the feel my forehead bleeds, for they fling whosoever has a mind stones at me for my ears misdeed. Bachon, this 5th stanza is a continuation of the previous one, and it further describes the speaker's humiliation at the hands of the people. लोगों ने कितना ह्यूमिलेट किया है, कितना उसका अपमान किया है। And here again the patriot is the speaker, children. The poet starts with filling up the setting even more. It is raining as the speaker is walking towards the scaffold. His hands are tied behind by a tight rope. उसके जो हाथ हैं बच्चों वो पीछे से बंधे हुए हैं
और बहुत टाइट रोप से बंधे गए हैं, so tight that it cuts his wrist, and he had now arrived closer to the shambles gate. और इतना टाइट बांधा गया है कि उसकी जो रिस्ट हैं वो कट चुकी हैं और वो चलता जा रहा है। वो महसूस कर रहा है, जब कोई चीज़ होती है, अगर कहीं से ब्लड निकल रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो ये चीज़ें महसूस की जाती हैं। तो वो भी महसूस कर रहा है कि उसकी रिस्ट कट गई है, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू द शैम्बल्स गेट वेयर ऑल द पीपल हैड gathered. The patriot is in his own mind, knowing the steadfast certainty of death ahead of him. और पेट्रियट को मालूम है कि मेरी जो मृत्यु है वो निश्चित है। As he is walking, he thinks he is bleeding from his forehead. उसे महसूस हो रहा है कि forehead, उसके माथे से कहीं खून निकल रहा है। And you know it is due to the stones hurled at him by some callous and cruel fellows. कुछ पब्लिक में इतने निर्दयी लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर पेल्टिंग की है, स्टोन पेल्टिंग, पत्थर फेंके हैं, और कोई एक पत्थर जो है उसके माथे पे लगा है, उसके माथे से खून बह रहा है क्योंकि हाथ बंधे हैं। तो वो महसूस कर रहा है कि फोरहेड जो है वो ब्लीड कर रहा है। नाउ लेट अस प्रोसीड। पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम आर कॉजिंग द इंजरीज, सो स्टोन्स हैव रिप्लेस्ड द पेटल्स ऑफ रोजेस। अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट समझिए। पहले लोग जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो वेलकम कैसे किया था, उसके ऊपर फूल फेंक के। और आज कॉन्ट्रास्ट देखिए कि विरोधाभास है, यहाँ पे पैराडॉक्स है। आज वही लोग हैं, वही पब्लिक है, लेकिन आज फूल की बजाय उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। ही सेज दैट द पीपल हु आर थ्रोइंग स्टोन्स are the ones who have an active mind and are aware of his misdeeds. The speaker doesn't seem to be angry with these people for throwing stones at him. बच्चों, वो लोग पत्थर उसके ऊपर फेंक रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसने कोई मिसडीड की है। जनता है, वोट दे के हम ही लोग नेताओं को चुनते हैं। उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो हम उन लोगों को नीचे कर लेते हैं, लेकिन अपना वोट हमें बहुत सोच समझ के देना चाहिए। यहाँ पे अब पेट्रियट, बिकॉज क्लियरली ये नहीं दिया गया क्या मिसडीड उसने की है, लेकिन लोगों ने उसे मिसअंडरस्टूड किया है दैट फॉर सम मिसडीड ही वुड हैव डन। सो ही डजंट ब्लेम पीपल, ही नोज दैट दे हैव मिसअंडरस्टूड हिम। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ उसकी रिफ्लेक्ट होती है, उसकी जो कैरेक्टर का एक पहलू कि लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, स्टिल ही थिंक्स कि these people are not supposed to be blamed. Why? Because they have misunderstood him. Now we have come to the last stanza. Thus I entered and thus I go. In triumphs people have dropped down dead, paid by the world what dost thou owe me? God might question, now instead it is God shall repay, I am safer so. The last stanza of the poem reflects on the patriot's death. It is full of philosophical and religious ideas. See the very first line, thus I entered and thus I go. What idea do you get? बच्चों, यहाँ entered and go दो ऑपोजिट वर्ड यूज हुए हैं, तो यहाँ पर आना और जाना है, और आना धरती पे और जाना दोनों ही हमारे हाथ में नहीं होता, दोनों ही ईश्वर के हाथ में होता है। और अगर आपने शेक्सपियर, हम लोगों ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं, अगर आपने 7 एजेस पढ़ी होगी तो उसमें भी यही चीज़ शेक्सपियर ने स्ट्रेस की है कि वी ऑल आर puppets and when we come and when to go is all decided by the Almighty. So the last stanza of the poem that reflects on the patriot's dead children, his entry and exit from life, position and people's minds in the presence of so many others sums up the speaker's life well. He says in his triumphs मतलब जब उसके अच्छे दिन थे यहाँ पे, वैसे विजय होता है। People have dropped him down dead. उसने लोगों के साथ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा,
लेकिन उसका जो है लोगों ने उसको ओवर एम्बिशियस समझ के उसका डाउनफॉल कर दिया. This suggests that he looks at his predicament as a triumph. Predicament means होता है some embarrassing situation. He believes that he stood by the right thing and thus considers himself victorious in defeat. This is positivity. The final 3 lines of the stanza deal with the ideas of the speaker. Yet again, we see Browning's stout religious belief. And what is Browning's stout belief? His belief is that God might say, your sins were already washed away when you died. The people sought to it. They punished you. What now do you expect from me? You are now free of all corruption. After that, what is there? Freeness. Thus, the patriot thinks that the punishment he got in the mortal world, mortal यानी नश्वर संसार में, mortal world has purged him, and that his hopes to go to heaven instead of hell. He feels safer knowing that God knows he stood for what he thought was right, and thus he will be safe under him. A big philosophy of life is there. इसलिए क्योंकि लाइफ हमें एक बार मिलती है, हमें अपनी ज़िंदगी में वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ बाप की ना सुने, लेकिन आपको विजडम के साथ अपने निर्णय लेने चाहिए.